Yes. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So now again, what we have to do is we need to make a logic. I think most of you have drawn it correctly, and the logic was also correct. But because of a little bit issue in the problem statement, we need to draw the what we say last rung for the same motor only. Okay, but that will work. Again, we need to make this kind of tagging. Okay, so let us start with the tagging first. Okay, let me just use another project. Let me just close this particular project. Let me restart it once again. The more time we get used to it, the more better we will have the understanding. So our purpose will also be solved. Let us just yes, hide it. Yeah. So let us start from beginning. We will start with TIA portal. You can create a new project. We can configure a device, add a new device. With a new device, I'm going to add 1214C DC DC DC. MLF number we can see from the PLC, and then we can add that particular hardware associated to it. Once we have added the particular hardware, now what we can do, we can compile it. We can start simulation after that. We can start the simulation. No action, and you can start the module. You can finish the module. Okay, you can start a new project. We can do that afterward, but at this point of time we can compile it and download. Although it is not required, but we have done this as a normal practice. Now what will be the next step, class? What will be our next step, class? Ritik is saying OB. What is the answers of others? Muskan is also saying OB. So class, in previous example, I told you that it is very important for all of us that we should not right away start by making ladder logic. We need a step so that if the system is complex, things should be easy for us. So now can you answer? Yeah, tags. Yes, yes. The procedure should be clear that first we should look for the tags. Okay, make that a habit. Okay, make that a habit that you first go for PLC tags. So let us make new tags now. Okay. So we have I0.0, or that will by default be I0.0. We will use forward underscore start underscore push button. Let me use capital letter only. Okay, it will automatically address it as a I0.0.
Okay, then I will have my reverse start push button. I had my reverse start push button. I can address it as 0.1. Then I had stop push button, right? Stop underscore PB. I will have a stop push button. Okay. Then I had, then I don't memorize that what was my next thing. So I will go to the problem statement. I had push buttons, reverse push button, I had stop push button, and I had contactors C1 and C2. Okay, so I had my contactors C1 and C2 also. What I will do, I will just introduce them also. So FWD forward contactor C1. Okay, and this address is correct, class I0.3. The address is correct. Yes or no? For forward contactor, the address that I have given is I0.3. No. So what should be the address to forward contactor? M0.0. Very correct, class. Very correct. Then I have reverse contactor T2. Okay, that will be M0.1. Okay, then I will have my overload relay, I think, yes. So I had a overload relay. You can say overload REL. Okay, or you can say fault also. FUL. Okay, so that will be addressed as not memory bit. It will be an input. So I have I0.0, I0.1, I0.2. I will have I0.3. Okay, then one more, that will be my output, that will be my motor, and underscore m, let me take it underscore m, and that will be my Q0.0. Okay, so I have done my tagging now. Now let us move to our program block, then our main OB. Okay, now just let us look at one by one all the objectives. So when the forward start push button, then your forward contactor should turn on and will remain on. Now I know that I will have a latching kind of operation where I will have input, I will have input, I will have output, I will have enter, I will have latching, I will just connect it to here. Okay, I will just connect it here. Okay, so this was my forward push button, so it will be I0.0. Okay, and then it will be my memory address to contactor. So my memory address to contactor was M0.0, and I have latched it to the memory address. One by one, I am going to draw my ladder logic. So you can know the sequence of making a particular ladder logic also. Okay. I have a note that if reverse start push button is pressed during the forward operation, that it will not work and reverse contactor C2 will remain off. Okay. Let me use it afterwards because uh, during forward operation, it is saying that reverse start push button. So it is not going to make any difference, or you can say that it will not make any difference as far as this particular loop is concerned. Okay, let us just skip this, or you can say mark this something like to be delayed or not text. Let us just highlight this, underline this. Okay, but we will look at it later. Okay,
So when reverse push button pressed once and reverse contactor C2 will turn on and remain on. Similar kind of function here also we are going to use for this. So let me use an enter. This, enter this, and I will connect it to this. Okay, something related to this. Okay, now this will be our I0.2, I0.3, 0.1. Okay, and this will be my M0.1, and it will be latched with M0.1. Okay, now let us see at the next statement. Okay, this is finished, this is finished. Now let us look at the, so now if, now we can go to this. If reverse push button is pressed, okay, during the forward operation, then it will not work and the reverse contactor will be remaining off. Okay, so that means that if your forward contactor is on, this memory is on, then your reverse is not going to work. So we can introduce a NC contact in between. I think NC contact here, NC contact here. Okay, you all have addressed it correctly, so I don't have to mention it differently. So this will be M0.1 reverse contactor, M0.0. Okay, now next statement. So now I can just leave this also. Okay, now if forward start push button is pressed during reverse operation, we have covered all this. Now when stop push button is pressed once, your all the contactors will be turned off. Okay, so for this what we need is, we need an NC contact here also and an NC contact here also, and it will be stop push button. I0.2. Okay, and let us look at the fault also. So we have a overload fault also. Okay, and we have a statement that it will start motor. We will make it separately in the end, this statement and this statement. But for overload we can draw it at this moment. So I will add this, I will add this. It will be I0.3 I0.3. And as the problem statement say, although you can say that problem statement is not very much clear, because this contactor, once contactor has been on, your motor should have been on, but still it says that for both conditions of your M0.1, single motor should on. And this will be our Q0.0. Okay, so let us just
This will be your solution associated to it. Okay. Now what will I do? I will just compile this solution. I'm going to download this solution, load this particular solution. I will use my PLC sim. I will expand, or you can say go to the work mode, project mode. I will add an project. Okay, we have added a particular project. And then we will have our simulation table also associated to it. Okay, so now what we will do, we will have our we can say our input will be more associated to I0.0, which is the forward, I0.1, I0.2, okay, and I0.3. Okay, so again these all are push buttons, and this is your fault. So once a fault is created, you can have, although we have provided a circuit to this. Okay, so there is no issue in that. So these are your fault relays. Now we can just monitor them. The signal is green, there is no issue. So now let us take it one by one. So my first question was, when forward start push button is pressed once, the forward contactor will turn on and remain on. The forward contactor C1 will be turned on and it will start the motor. Okay. So class, my question is, I have by purpose taken these problem statements because these problem statements have some flaws in it. Okay, by saying that motor M is on, you all know that there is a contactor associated at the outer circuit in the physical world always. So once the contactor is on, that output can be, we might have provided that particular output to the contactor, and through that contactor we might have given an output through a relay, and that contactor would have created a made the circuit completed, and we might have got the output. Rather than using Q0.0 as a motor output, what the problem statement would have been, that yes, an LED will light, LED light will be, you can say, activated, because the motor is started in the both reverse and forward directions. And this M0.0, rather than M0.0, we might have taken Q0.0 here, Q0.1 here, and rather than giving these contactors with Q0.M0.1 or M0.0, okay, so one mistake is here, that I have used M0.1 in both things. I might change this. But to continue with my statement is that rather than giving these a memory status, we might have given output to them. We might have taken output from the motor, rather than we might have provided an indication of LED. Am I correct? Did you get my statement? Are you aligned to this statement? Yes or no? Kindly respond. The problem statement would have been better with that. मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा वेग है. क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि दोनों कॉन्टेक्टर्स से आपका मोटर स्टार्ट हो जाना चाहिए, जबकि इंडस्ट्री में फिजिकली आप लोगों को पता है कि कॉन्टेक्टर
से हम आउटपुट दे सकते हैं। कोई भी हमने आउटपुट दे दिया, वो कॉन्टेक्टर को एक्टिवेट कर देगा, कॉन्टेक्टर से सीधे आपका मोटर जो है स्टार्ट हो जाएगा। और लॉजिक में ये होना चाहिए कि एक एलईडी है जो मोटर को स्टेटस को बताएगी, उसको हम ऑन या ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने मिस्टेकनली M0.1 ले लिया दोनों जगह, आप में से किसी ने मुझे करेक्ट भी नहीं किया। तो लेट अस गो ऑफलाइन। And this will be M0.0. Let me take it M0.0. Okay, now it is correct. So now I will compile it, I will download it, I will load it. PLC sim will configure it accordingly. Okay, and now we are good to go. So I will simulate it. Let us see at the outcome. Yeah, so this is a push button. So I will give a 1 to it and then again 0. So what happened with this? Your contactor was started, it is now latched, and your contactor M0.0 bit is activated, because of which your motor is activated. Okay, okay. Now let me just true the stop button now and give it 0 again. So now it has stopped. Okay, now let me start the reverse. 1 0. Okay, so now reverse contactor is started, the motor is started. Okay, the motor has been started and it is latched also. Okay, so both of these statements are true. Okay, now your reverse is pressed. Okay, your reverse is started. So it can happen in industries also that your reverse is started. So you have your reverse now on, and by mistake you on your forward. Okay, so what will happen physically if it is both forward and reversed activated? Class, can you respond? What can happen अगर हमने फॉरवर्ड को भी एक्टिवेट कर दिया और रिवर्स को भी एक्टिवेट कर दिया सर्किट में? अगर हम देखें इस पर्टिकुलर सर्किट में तो क्या हो सकता है? अगर आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होगा ऋतिक? अगर फिजिकली दोनों कॉन्टेक्टर ऑन हो जाए या शुभम, इट कैन बी मोटर फेल हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बाईपास। तो मैं फिजिकल स्टेट की बात कर रहा था, मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की बात नहीं कर रहा था ऋतिक। अगर फिजिकल स्टेट में दोनों कॉन्टेक्टर ऑन हो जाते हैं तो देयर विल बी अ मोटर फेलियर, देयर विल बी अ शॉर्ट सर्किट। यस, करेक्ट। So therefore this exercise has been given. अब आप इसमें अगर आप बाय मिस्टेक फॉर एग्जांपल अभी आपका रिवर्स ऑन है, हम I0.0 को भी ट्रू करके देखते हैं और ट्रू भी पुश बटन ऑन हो गया बाय मिस्टेक किसी से, देन व्हाट विल हैपन? वन स्टेट एंड जीरो स्टेट। ओके, पुश बटन ऑन हो गया लेकिन फॉरवर्ड स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि रिवर्स स्टार्ट था, और वाइस वर्सा भी काम करेगा। अगर फॉरवर्ड स्टार्ट है तो रिवर्स स्टार्ट नहीं होगा।
ठीक है ना? So this purpose is also solved. This purpose is also solved. Okay, both note and purpose is solved. Stop push button is pressed. We have seen that when stop push button is pressed, then all will be off, and when overload fault will be there, let me just make the overload fault true now. 1, overload fault will not be a push button. Once it is a overload fault, load fault, it will always be a overload fault only. Your M0.0 is switched off, M0.1 is switched off, and Q0.0 is switched off. Okay, so let me print this. Sir, hello. Hello. What was the name to that? Hello. RDOL SDNM. Okay. So we have completed our DOL, we have completed our RDOL. It is Hello. highly recommended that you Hello. use TIA portal and try to work on it by your own. I'm therefore giving it as an assignment. But if you are not able to assess this, then you have the solution to this. I will provide these documents on a Google Drive. I will give you that link on the WhatsApp group also, and I will ask you for the assignment for the same. Okay, so now I think we have our assignment associated to this question. So you have both these questions now. This question, RDOL and DOL. You have this assignment also. Yeah, these both are same, I think. No, not same. DB1, DB2. Okay, and trigger. They both are same. Yeah, they both are same. So we have this assignment. I will provide. This is the ladder logic of MMS and A1, A2. Yeah, correct. So this list I am going to give you. I will also upload the assignment 1 as we have talked earlier. Okay, this is the assignment 1 that will be given to you. A little bit different from this. I've changed few questions associated to it, and the PPT also I have in my laptop, and I am just presenting it on the PC of this our lab of mechatronics. So I will give all those assignments to you, and you can do that. Okay. शुभम कुमार हैज अ क्वेश्चन, सर ये फिजिकली पॉसिबल है कि ऑन स्टॉप बटन से दोनों कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाए? मैं क्वेश्चन का मतलब नहीं समझा, आपका किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है? यहाँ पे ऑन स्टॉप बटन से दोनों ऑफ क्यों हो जाएंगे? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. Tom, can you please a little bit explain your question? Hello. स्टॉप पुश बटन से आपके दोनों तीनों चीजें ऑफ होंगी, कॉन्टेक्टर दोनों ऑफ हो जाएंगे. ऑन से कैसे, मतलब ये फिजिकली पॉसिबल है? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. सर ये फिजिकल पॉसिबल है कि ऑन वन स्टॉप, अच्छा पुश बटन से ऑफ होने के लिए? हाँ देखिए, पुश बटन से आपके जो लैचिंग वाले ऑपरेशन होते हैं ना, वो पुश बटन से ही ऑपरेट होते हैं. आपके यहाँ पे पुश बटन लगे हुए हैं, आप एक पुश बटन से सेट भी कर सकते हो, रीसेट भी कर सकते हो. सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. इट इज वेरी मच पॉसिबल, बट थ्रू पीएलसी. थ्रू पीएलसी ऑल्सो, और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में भी अगर आप जाओगे तो एक सिंगल, अगर इनपुट पे आपने दो आउटपुट लगा रखे हैं पैरेलल में, तो इट कैन बी फिजिकली पॉसिबल ऑल्सो. दोनों कॉन्टेक्टर ऑफ भी कर सकते हो आप.
आप यहाँ पे फिजिकली उस चीज को देखोगे भी, सो डोंट वरी अबाउट दैट शुभम। ओके, जब आप यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होगे, आपको हमारा जो मैकाट्रॉनिक्स मॉडलर सिस्टम है उसमें आपको पुश बटन भी मिलेगा, मशरूम बटन भी मिलेगा, और सारे आप ऑपरेट करके देखोगे, अपने आप ही आपको एक पूरा स्टेशन चलाना है और बंद करना है। यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, तो आपको जो भी आप ये पढ़ रहे हो उसको फिजिकली भी आप करोगे यहाँ पे मैकाट्रॉनिक्स लैब में। आपको केवल मैंने इसलिए यहाँ पे थ्योरी थ्योरी पूरी अच्छे से कंप्लीट कर दिया ताकि आप ही मेरे को सोल्यूशन बता के दोगे कि क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और हम सेशन के एंड में आप इतने कंपेटेबल हो जाओगे कि मुझे अगर समझ में नहीं आ रहा है सिस्टम के बारे में, देन यू विल बी एबल टू आंसर। ठीक है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। So the attendance is full, 21 students. My question to you is that अभी तक सब समझ में आया है? कुछ हैवी तो नहीं लग रहा स्टूडेंट्स? अभी तक is it all okay? Is it all good? सर ओवरलोड फॉल्ट का मतलब क्या है? And my question is that interesting लग रहा है आपको ये? इंटरेस्टिंग तो मेरे ख्याल से बहुत, मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग आप लोगों ने फील भी नहीं करी होगी शायद। ओके, तो इसी तरीके से हम बिना लोड के कल भी कंटिन्यू। सर अच्छा साहिल, ओवरलोड फॉल्ट का मतलब क्या है? देखिए, ओवरलोड फॉल्ट का मतलब बहुत फिजिकल सेंस में मान के चलो तो आपका एमसीबी है। ठीक है ना, अगर आपकी एमसीबी ट्रिप कर गई, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, अगर आपके पास कोई पीएलसी नहीं है या कुछ नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि एमसीबी पे ओवरलोड आया, एमसीबी ट्रिप कर गई है। ठीक है ना, लेकिन पीएलसी को तो पता ही नहीं है कि एमसीबी ट्रिप होने की वजह से उसको पावर नहीं मिल रही है, तो वो भी बेवजह पावर क्यों देगा मोटर को? ठीक है ना, मतलब एक तरीके से साहिल ये समझो कि आपका कोई आउटर सर्किट है जिसपे आपकी एमसीबी लगी हुई है और एक मोटर लगा हुआ है। आपने लॉजिक अपलोड कर दिया है उसमें, और लॉजिक ये आपने डाला हुआ है कि आप बिना ओवरलोड फॉल्ट के आपने लॉजिक डाल दिया। हालांकि अगर वो एमसीबी ट्रिप हो गई है तो आपका मोटर तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन आपका लॉजिक तो वही जा रहा होगा ना, लॉजिक तो वही जा रहा होगा कॉन्टेक्टर को, तो वो भी क्यों जाए बेवजह, पावर हम क्यों वेस्ट करें? तो वो लॉजिक हम ऐड कर देते हैं कि हाँ, अगर ओवरलोड का फॉल्ट आया, एमसीबी अगर कोई ट्रिप हो रही है, तो लॉजिक भी हमारा मोटर को नहीं चलने। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ट्रिप हुआ है तो कोई इशू तो हुआ ही होगा, कोई पर्सन जो है वो वहां पे सही करने जा रहा है और गलती से किसी ने एमसीबी को ऊपर कर दिया, तो एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो अगर लॉजिक से ही वो बंद हो गया तो वो मोटर तब तक के लिए बंद है जब तक कि सेंटर से, जो आप कहोगे कि एक कैसे एडमिन से उसको एक नॉड नहीं मिलेगा, तो वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। साहिल, इज दैट ओके? यस। सो होपफुली कल हम एक और क्वेश्चन लेकर के शायद एक एग्जाम ले लें आप लोगों का। छोटा सा टेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा उसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत सिंपल सा टेस्ट होगा जिसमें आपसे क्वेश्चन होंगे, और परसों से फिर सूरज सर विल टेक योर क्लास विद डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ पीएलसी प्रोग्राम। ओके, तो अभी तक का मेरा जो सेशन था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। कल हम एक और क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा इंटरेक्ट भी करेंगे, तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं, वॉइस वगैरह चेक कर लेना। सो अ लिटिल बिट इंटरेक्टिव, एक छोटा सा टेस्ट लेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड आवर सेशन फॉर टुमारो। नयन, कोई ऐसा इशू नहीं है अगर आप कल नहीं आ पा रहे हो। टेस्ट का मैं आपको फॉर्मेट फिर दूसरा बना करके दे दूंगा। अगर हम कल टेस्ट लेते हैं तो मैं आपको कोई दूसरा फॉर्मेट बना करके टेस्ट का दे दूंगा, आप वो ले लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट मतलब दिस इज जस्ट अ वन टाइम सोल्यूशन, ऐसा हर बार नहीं होना चाहिए। ओके नैन? ओके, और किसी को तो इशू नहीं है कल? ओके, सो वी विल
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंदनी, बहुत बहुत सिंपल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपने पूरी क्लासेस करी हुई हैं तो आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं है। ओके ओके हितेंद्र, कोई बात नहीं, मैं आपको नयन को एक अलग आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको फिर मैं उसके हिसाब से अलग एक टेस्ट बना करके दे दूंगा। ओके, सो आई थिंक देयर आर ओनली 2 पीपल जिनको थोड़ा इश्यू होगा, बाकी लोगों को हम कल फिर सेशन कंक्लूड कर लेंगे। ओके, सो फॉर टुडे गुड बाय फ्रॉम माय साइड, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।